to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am I hope I am audible to you. Good evening to all. Good evening to all. I hope I am audible to you. Today we are going to see another chapter from your pharmacology. So if I am audible to you, please write yes in the comment box. If I am audible to you, please write yes in the comment box so that I can start. I hope I hope I am I hope I am audible to you. Yes, okay. They wish. Okay. So yesterday so we have seen our analgesics known as the opioidal analgesics or central analgesics. We have already seen the narcotic analgesics or central analgesics or opioid analgesics. Now analgesics, there are two types of analgesic drugs. First category is nothing but the opioidal analgesic drugs. Now opioidal analgesics or narcotic analgesics or central analgesics. So basically the term analgesics means what? The term analgesic means the drug, the chemical the drug or chemical or agent which will decrease your pain, known as an analgesic. Anything that will decrease the drug or the chemical or the agent which will decrease your pain sensation. Pain is nothing but the unpleasant noxious stimuli. What is pain? Pain क्या होता है? दर्द क्या होता है? Pain is nothing but the any noxious or unpleasant stimuli. Now pain can be decreased by two type of analgesic drugs. First is nothing but the central analgesics or narcotic analgesics or opioidal analgesics. Now these drug, central or narcotic or opioid drug, they will decrease the pain. They will decrease the pain by inducing the narcosis or by inducing the sleep or by altering your consciousness. अभी जो भी drugs आपने देखे, so opioidal analgesics, what they will do, they will decrease your pain sensation by suppressing your CNS. They will cause narcosis, means sleep. They will induce the sleep. They will decrease your pain by altering your consciousness. But these are the, now another category of drug is nothing but the analgesics, antipyretic and non-steroidal anti-inflammatory drugs. Now analgesics, as I told you, there are two types. First one is known as opioidal analgesics or central analgesics, and second one is known as a Nasaids. Now what is the major difference between opioidal analgesic drugs and your analgesic antipyretic drug? जो आपके opioidal drug होते हैं sorry, जो आपके opioidal analgesics होते हैं, जो आपके narcotic analgesics होते हैं, जो आपके central analgesics होते हैं, they will alter your consciousness. But यहाँ पे non steroidal
non-steroidal anti-inflammatory drugs or analgesic antipyretics, they will not alter or they will not have effect on your consciousness. So they will not alter your CNS, they will not have effect on a consciousness. So major difference between narcotic and non-narcotic analgesics. Narcotic analgesics or opioidal analgesics or central analgesics, they will produce some alteration in your consciousness, but these normal analgesic antibiotic or painkillers, you say, they will not alter your consciousness. That is the first difference. Second difference क्या है कि opioidal or narcotic analgesics, they will interact with the opioidal receptor like mu, kappa, delta, we already seen. But these are the drug analgesic antibiotic, they will not interact with your opioidal receptor, right? Second difference. Third difference, जो आपके opioidal analgesics है, जो आपके central analgesics है, जो आपके narcotic analgesics है, so central or narcotic or opioidal drugs, they will not have anti-inflammatory activity, they are not useful in the inflammation में useful नहीं होंगे, they are non-inflammatory, they are analgesics but not inflammatory. But now non-steroidal anti-inflammatory drugs or these non-narcotic analgesics, they are analgesics also, they are antipyretic also, they are antipyretics also, and they also decreases the inflammation. So major 3-4 differences are there in a narcotic and non-narcotic analgesics, है ना. तो एक क्या करता है, आपकी कॉन्शियस को अल्टर करता है एंड दे विल डिक्रीज द पेन. दूसरा क्या करता है, दे विल नॉट अल्टर योर कॉन्शियसनेस. मतलब ओपियोइडल ड्रग, सेंट्रल एनाल्जेसिक नार्कोटिक, दे विल अल्टर योर कॉन्शियसनेस. जो नॉर्मल आपके जो पेन किलर्स है, एनएसआईडीज है, दे विल नॉट अल्टर योर कॉन्शियसनेस. सेकंड थिंग कि opioidal drug जो है, they will interact with the opioid receptor. Central drug, they will interact with the opioid receptor, mu, kappa, delta. But ये जो drugs है, NSAIDs, non-narcotic analgesics, they will not interact with the opioidal receptor, है ना. Second difference हो गया. Third difference क्या है भाई? Third difference है आपका कि opioidal analgesics, they are not having anti-inflammatory activity. Inflammation में useful नहीं है. Now analgesic antipyretic, they are useful in the inflammation. Again, there are more effects also. For example, all the non-narcotic analgesics or NSAIDs, they are analgesic, antipyretic, anti-inflammatory. Analgesic, antipyretic, anti-inflammatory. Opioidal drugs, they are not a anti-inflammatory, they are not a antipyretics. Okay. Then another one. So most of the NSAIDs, they will have other effect. Like for example, most of the NSAIDs, they will have uricosuric effect. Most of the NSAIDs, they will have antiplatelet effect, and all these NSAID, okay, analgesics, antipyretic, non-steroidal anti-inflammatory drugs, they will somehow prevent the synthesis of prostaglandins, leukotrienes, right, which are known as a pain mediator, which are known as a inflammatory mediators. तो ये डिफरेंस होता है कि नार्कोटिक एनालिसिस में, सेंट्रल एनालिसिस में, है ना, जो नार्कोटिक और सेंट्रल और ओपियोइडल एनालिसिस एंड आपके नॉर्मल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स में, राइट. So I have told you the difference. Tomorrow also we are going to see again important points. So today we will see first. So what do you mean by analgesic antipyretic? So these are the drug which will decrease your pain. They will decrease your pain. Pain क्या होता है? Pain मतलब आपका लिखने वाला पेन नहीं. Pain means what? So it is a unconscious, it is a unpleasant or noxious stimuli. Unpleasant or noxious stimuli. So it is a unpleasant or noxious sensory stimulation, right? That is known as a pain. So analgesics are the drug which will relieve your pain, which will relieve or decrease your pain without interacting with the opioidal receptor. Without interacting with the opioidal receptor. Okay, so these analgesics or painkillers or analgesic antibiotic or NSAIDs, मतलब non-steroidal anti-inflammatory drugs. So they will decrease your pain without interacting with the opioidal receptor. First, second thing, so they will reduce your elevated body temperature. मतलब क्या कि all these NSAIDs or analgesic antibiotic,
they will decrease. What they will decrease? They will decrease elevated body temperature. मतलब क्या, जो आपका body temperature बढ़ा है, मतलब आपको जो बुखार हुआ है, so they will decrease the fever. In simple language, they will decrease the elevated body temperature, and that's why they are also having antipyretic effect. तो क्या है भाई? antipyretic effect. So they are antipyretic. So your narcotic analgesic, they are not antipyretic, they are not anti-inflammatory. So NSAIDs, they are antipyretic also, they are analgesics also, and they are anti-inflammatory also, right? So analgesics, antipyretic and anti-inflammatory, right? So most of the NSAIDs, they also have a anti-inflammatory property, and that's why they are known as a NSAIDs. NSAIDs मतलब क्या? Non-steroidal, because they are not having steroid in nature. They are not a steroid in nature, non-steroidal. Yes. So steroidal क्यों? मतलब steroidal drugs also are having anti-inflammatory properties. जैसे आपका जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होता है, जैसे आपका प्रेडनिसोलोन है ना, ट्राइमसिनोलोन है ना, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन है ना, प्रेग्निलोन, these type of drugs, they are known as steroidal anti-inflammatory, because anti-inflammatory drugs are of two types, either steroidal or non-steroidal. Okay, so these analgesic antibiotic, they are not having any structure, steroid structures, that's why they are non-steroidal anti-inflammatory drugs. Now very basic question आता है आपको कि माइंड में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेमेशन. सर इतना बोल रहे हैं इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन चीज होता क्या है ना, इन्फ्लेमेशन चीज क्या है भाई? व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन क्या होता है? What do you mean by inflammation? Before that, I will explain you inflammation. Before that, so all NSAIDs will also have anti-platelet activity. Most of the NSAIDs, they will have anti-platelet activity. Means they will prevent the platelet aggregation. तो basically difference क्या है कि भाई analgesic antibiotic NSAID जो है, they will decrease your pain without interacting with the opioid receptor, without interacting without changing your consciousness. They will decrease your body temperature, known as antibiotic effect. They will have also anti-inflammatory activity. All of them, most of them will have a anti-platelet activity, right? तो अभी inflammation क्या होता है? And they will not produce any sedation. मतलब these NSAIDs, they will not have any sedation, or they will not induce any kind of sleep. जैसे narcotic analgesics या फिर other है, they are producing the sleep, they are having addiction properties. बट ये अपने जो पेन किलर है NSAID, दे विल नॉट हैव एडिक्शन प्रॉपर्टीज, दे विल नॉट इंड्यूस अ स्लीप, दे आर नॉन सेडेटिव. लेकिन इसमें एक ड्रग होता है, एक सेडेटिव होता है, ये क्या नाम है उसका? इंडोमिथासिन. तो देयर इज अ वन ड्रग है ना फ्रॉम द NSAID में क्या है कि देयर इज अ वन ड्रग नोन एज इंडोमिथासिन. कौन सा नाम है याद रखना है आपको? देयर इज अ ड्रग नोन एज इंडोमिथासिन. Most of the NSAID, okay, all NSAID, they are not having sedation as a aspect or sedation as a property. They will not alter your sleep, they will not cause addiction. But there is one drug known as indomethacin, which can cause sedation. इसका adverse effect होता है sedation. Most of the, so there is one exception. जैसे most of the NSAIDs, they are not sedating, but indomethacin is. All NSAIDs, they are a painkiller, okay? They are the analgesic drug, they are the anti-inflammatory drug. बट ये जो इंडोमिथासिन है, दो इट इज अ पेन किलर, बट इट सेल्फ कैन इंड्यूस अ पेन. इसका एडवर्स इफेक्ट होता है फ्रंटल हेडेक. इसका एक एडवर्स होता है फ्रंटल हेडेक. देयर इज वन एडवर्स इफेक्ट फ्रंटल हेडेक, सो इट कैन इंड्यूस अ पेन. सो है ना, एनालिसिक ड्रग व्हिच हैज अ पेन एज एडवर्स इफेक्ट, है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, बट इट इज देयर, है ना. आपको बोलेगा सर एनालिसिक ड्रग तो पेन रिलीव करता है, तो आप कैसे बोल रहे हो ये पेन करता है? तो देयर इज अ एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस इंडोमिथासिन नोन एज अ फ्रंटल हेडेक. So it is an analgesic drug which induces the pain. That is a very important. ये कंसेप्ट आपको बहुत सारी बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है? सो मैंने पढ़ के आपको सुनाया है, राइट? तो most of these drugs, they will not cause sedation, but indomethacin can cause sedation. Most of these drugs, they are not having, all of these drugs are not induce sleep, and they will not cause addiction. They will not cause addiction. Indomethacin can cause sedation, and indomethacin can also cause pain.
So analgesic which induces the pain is a indomethacin, right? चलो, now I will explain you inflammation. Inflammation क्या है? So what do you mean by inflammation? And I hope I am audible to you and आपको समझ रहा है. What do you mean by inflammation? यहाँ पे term है inflammation. Inflammation. What do you mean by inflammation? So inflammation means what? Inflammation means what? Inflammation is a protective reflex of your body, or it is a protective reaction of your body. Inflammation is actually a beneficial reaction of your body. Actually, it is a beneficial reaction. Inflammation is a beneficial reaction of your body. Now, inflammation is because of the first. अगर कोई आप है ना, if there is a microbial infection, ना, तो microbe, if there is a microbe, है ना, microbial infection आता है, inflammation क्यों होता है? Microbial infection. Second chemicals. So if any irritant chemical is there on your body, you know, so inflammation is because of the either microbial infection, inflammation is because of the either toxic chemicals or toxicant, and inflammation may be either because of the trauma to the tissue. Trauma क्यों होता है? Due to tissue or cell injury. Trauma. Actually, inflammation, what we didn't do, and it is because of the microbial infection or because of the toxic chemicals or irritant substances or because of the trauma to the tissue. Now, inflammation results in, inflammation मतलब क्या? It is a body's reaction. Inflammation is a body's reaction against the either microbial infection or either toxicant chemical or either due to tissue damage, है ना? Now, inflammation result क्या होगा? What will be the result of inflammation? Inflammation will try to neutralize this infection, you know. So inflammation will try to neutralize this infection. The infection will be killed in the body, right? The infection will try to remove this toxicant, try to prevent the cell injury. Inflammation will try to repair your tissue. Tissue damage हो गया आपका, tissue trauma हो गया, तो inflammation will try to repair your tissue. So actually inflammation is a good response. It is a response against the microbial infection or toxicants or tissue trauma, right? But sometimes what happens, ये तो नॉर्मल है कि अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो इन्फ्लेमेशन होगा, अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो इन्फ्लेमेशन होगा, अगर आप में स्किन के ऊपर कोई टॉक्सिक केमिकल गिर गया तो इन्फ्लेमेशन होगा, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्किन के ऊपर अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, क्या होगा? स्किन का इन्फ्लेमेशन होगा, वो जल जाएगा स्किन, है ना? इफ देयर इज अ ट्रॉमा, आपको अगर आपके हाथ में कट कर दिया, दैट इज अ टिश्यू डैमेज, दैट टिश्यू इज रिपेयर्ड, है ना? वहाँ पे रिपेयरिंग, इट इज एक्चुअली रिपेयरिंग मैकेनिज्म, है ना? एक्चुअली इन्फ्लेमेशन इज इन्वॉल्व इन द रिपेयर, है ना? टिश्यू रिपेयर. तो इन्फ्लेमेशन अच्छा होता है. आप बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं आप, इन्फ्लेमेशन अच्छा होता है, तो आप उन्हें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग क्यों यूज करें? नॉर्मली योर बॉडी विल रिएक्ट विद द माइक्रोबियल इन्फेक्शन और टॉक्सिक केमिकल्स और टिश्यू इंजरी हो गए तो वो टिश्यू वैसे ही नहीं रहेगा ना, वो सड़ जाएगा, तो नया बनाना पड़ेगा, राइट? सो इन्फ्लेमेशन इट इज अ रिएक्शन अगेंस्ट these three things. Inflammation is a reaction against these three things. But sometimes what happens, inflammation is not only because of this also. Sometimes some pollen grains, sometimes some autoimmune disease like asthma and your gout and arthritis. Inflammation and gout and arthritis. Sometimes pollen grains or some pollen grains or some chemicals or some autoimmune disease like asthma and arthritis. Now in this case your body cell will cause inflammation, and that inflammatory reaction can damage your tissue permanently. So in that case analgesic antibiotic drugs, they are useful. Okay, नॉर्मली जो आपको इन्फ्लेमेशन ये जो होता है, इसमें आपका खुद का सेल का हीलिंग होना चाहिए. इन्फ्लेमेशन एक्चुअली इज अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग.
if you got a damage, if you got a skin damage, if you got a infection, so if you got a toxic chemical, your cell, your tissue, your organ will get damaged, right? So to repair that, to heal that, inflammation is the reaction of your body. Inflammation is your reaction of your body against this, against microbial infection, against toxic chemical, against the tissue injury, so that it will be repaired, so that it will be healed, right? Now it is a normal thing, but what what happens sometimes, due to pollen grains there is inflammation, due to autoimmune disease. Autoimmune disease क्या होता है? Autoimmune disease means what? For example, अस्थमा हो गया आपका, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया. ऑटोइम्यून डिजीज एग्जैक्टली होता क्या है? autoimmune disease means your own body cell will be considered as your enemy. autoimmune disease मतलब क्या? It may be either genetic also, but your own body cell, आपके खुद के बॉडी के सेल क्या कंसिडर किए जाएंगे? आपके दुश्मन. your own body cell will be considered as an enemy, and against that cell antibodies are produced. Now that cell will be considered as antigen, your own body cell will be considered as antigen, against that antibody are produced. Antibodies are produced. Now antigen antibody reaction causes the inflammatory response, and that inflammatory response can damage your tissue permanently. So to prevent that, anti-inflammatory drugs are used to modify the inflammatory response, to alter the inflammatory response, to elevate the inflammatory response. So that's why anti-inflammatory drugs, right? Nobody will tell you in this way. ये बहुत ही जब पढ़ना पड़ता है, इसके लिए पढ़ने के बाद में वो समझ में आएगा, ठीक है, राइट? तो drugs which are known as analgesics, antipyretics, anti-inflammatory, they will decrease pain without causing alteration in the consciousness. They will decrease your body temperature. They will have anti-platelet action. They will have anti-inflammatory effect. They will not cause sedation. They will not have addiction property, right? Now temperature regulation. पहले अपन देखेंगे antipyretic. क्या देखेंगे भाई? पहले antipyretic. What do you mean by antipyretic? है ना, antipyretic. Antipyretic. So what do you mean by antipyretic? So these are the drugs which will decrease your elevated body temperature. Antipyretic मतलब क्या? अगर आपका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ गया, बुखार आ गया आपको, बुखार क्यों आता है ना, बुखार क्यों आता है आपको? अगर कोई इन्फेक्शन हो गया आपको, तो योर बॉडी टेम्परेचर will increase. So actually again, fever is also a sign of infection. Fever is also your body's reaction against the infection. Fever is also your body's reaction against the inflammation. ठीक है? तो क्या होता है कि अगर आपको माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया, तो वो इन्फेक्शन बॉडी क्या करती है? उसको किल करने का ट्राई करती है. बॉडी विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय इट बाय राइजिंग द बॉडी टेम्परेचर. बॉडी खुद की टेम्परेचर बढ़ाएगी ताकि वो माइक्रोबियल, जो भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन है वो मर जाए, है ना. एक्चुअली इट इज अ गुड रिस्पॉन्स, बट अपन क्या कर रहे हैं कि वी आर सप्रेसिंग द फीवर, है ना, क्योंकि सप्रेसिंग फीवर. बट व्हाई वी आर सप्रेसिंग फीवर? बिकॉज समटाइम्स इफ फीवर इज increased, that fever if it invaded your brain, तो अगर वो फीवर आपके ब्रेन तक गया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, बढ़ गया आपका, तो आपको सीजर्स भी आ सकते हैं, आपको एपिलेप्सी भी हो सकता है ना, झटके भी आ सकते हैं. इसलिए अपन फीवर आने के बाद में एंटीपायरेटिक ड्रग लेते हैं, राइट. बट एक्चुअली इट इज अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स. थोड़ा बहुत फीवर आया तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत होना चाहिए, है ना, वो आपकी बॉडी के माइक्रोब्स को किल करेगा. बट बहुत ज़्यादा फीवर आ गया और अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वो आपको जाना चाहिए फिजिशियन के पास में, राइट. तो एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक मीन्स द ड्रग विच डिक्रीजेस योर एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर फॉर फीवर. नाउ इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेम्परेचर रेगुलेशन इन द बॉडी. बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कैसे होता है? हाउ देयर इज अ रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर इन द बॉडी? फर्स्ट, बॉडी कोर टेम्परेचर इज मेंटेन बाय, है ना, बॉडी कोर टेम्परेचर इज मेंटेन ऑलवेज. आप देखो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा? 37 डिग्री ना. सो योर बॉडीज कोर टेम्परेचर इज ऑलवेज मेंटेन बिकॉज यू हैव सम मैकेनिज्म्स ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन इन द बॉडी. कि अगर टेम्परेचर कम हो गया तो बॉडी विल ट्राई टू इंक्रीज द टेम्परेचर अप टू नॉर्मल, है ना.
अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो बॉडी विल ट्राई टू डिक्रीज द टेम्परेचर अप टू नॉर्मल. सो यू हैव ओन मैकेनिज्म्स, है ना, ओन रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स इन द बॉडी. अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो बॉडी नॉर्मल तक कम करेगी. अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया तो बॉडी विल, आपकी बॉडी इंक्रीज करेगी टेम्परेचर अप टू द नॉर्मल. तो दैट इज नोन एज द टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म्स इन द बॉडी. ठीक है, तो टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म. तो सबसे पहले कि आप टेम्परेचर मेजर कहाँ से करते हो. सो योर बॉडीज कोर टेम्परेचर इज मेजर्ड मोर एक्यूरेटली और मोस्ट एक्यूरेटली एज अ रेक्टल टेम्परेचर. देखो, आपने कभी बचपन में डॉक्टर के पास गए होंगे, फीवर होगा तो डॉक्टर क्या करते हैं, थर्मोमीटर. तो फिजिशियंस यूज टू गिव यू थर्मोमीटर टू होल्ड द थर्मोमीटर इन योर माउथ. आपको मुंह में उसको होल्ड करने के लिए बोलते हैं, है ना, मतलब वहाँ से टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं. या फिर डॉक्टर यूज टू आस्क यू टू होल्ड दैट थर्मोमीटर अंडर द आर्म. आपको आपके बगल में, है ना, या आपके आर्म के नीचे वो थर्मोमीटर रख के टेम्परेचर मेजर करते हैं. या फिर देयर इज थर्ड ऑप्शन. सो डॉक्टर विल मेजर योर बॉडी टेम्परेचर बाय इंसर्टिंग द थर्मोमीटर इन योर रेक्टम, है ना, आपके रेक्टम में इंसर्ट करके टेम्परेचर मेजर करता है. एंड दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर. सो बॉडीज कोर टेम्परेचर इज मेजर्ड मोर एक्यूरेटली और मोस्ट एक्यूरेटली एज अ रेक्टल बॉडी टेम्परेचर, है ना. रेक्टल बॉडी टेम्परेचर इज द मोस्ट एक्यूरेट. तो सबसे एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर कहाँ पे मेजर कर सकते हो आप. योर बॉडी टेम्परेचर, इफ यू वांट टू मेजर, इंसर्ट द थर्मोमीटर इन योर रेक्टम एंड that will give you most accurate body temperature. So what is the normal body temperature? 36.1 to 37.8. 36.1 to 37.8 degrees Celsius. That is the your body's core temperature. Okay. Now increased in temperature, that is known as a hyper, and that is known as a pyrexia or hyperpyrexia. है ना. Decrease in the body temperature known as a, है ना, hypopyrexia, है ना, और शिवरिंग. ठीक है ना. ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड बाय पुटिंग द थर्मोमीटर अंडर द आर्म, पुटिंग द थर्मोमीटर इन योर माउथ, पुटिंग द थर्मोमीटर इन योर रेक्टम. रेक्टल टेम्परेचर इज द मोस्ट एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर. एंड रिमेंबर, hyperpyrexia means what? Hyperpyrexia means if your core body temperature is increased up to 41 degrees. अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर 41 डिग्री है, if your body temperature is increased due to some reason, it may be, है ना, increase क्यों होता है, most of the time infection की वजह से. So most of the time body's temperature is increased because of the infection or hormones, right? So hyperpyrexia means what? So core if your core body temperature is 41 degrees Celsius, now that may result in the fatality. अगर टेम्परेचर बढ़ गया, है ना, 37 नॉर्मल है, 38 तक ओके, कोई दिक्कत नहीं, है ना, 38. बट इफ इट इज इंक्रीज टू 40, 41, तो दैट इज अ फेटल. मतलब क्या, आपका जानलेवा हो सकता है. तो इफ योर बॉडी टेम्परेचर इज 41 डिग्री, नॉट फ़ारेनहाइट. तो जो आपका थर्मोमीटर होता है उसमें फ़ारेनहाइट होता है. तो जो बोलते हैं ना, मेरे बच्चों को 101 बुखार है, तो 101 फ़ारेनहाइट है, वो डिग्री नहीं है. तो मर जाएगा वो, है ना. जो फ़ारेनहाइट होता है वो फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन होता है डिग्री में, राइट. तो if body's core temperature is a 41 degree, that may result in the fatality and that may cause convulsions and seizures and epilepsy, है ना. Now body temperature is controlled by two mechanism. आपके बॉडी के टेम्परेचर कैसे कंट्रोल होता है. सो बॉडी टेम्परेचर इज कंट्रोल बाय टू मैकेनिज्म. तो कौन से मैकेनिज्म आए हुए. बॉडी टेम्परेचर इज कंट्रोल बाय टू मैकेनिज्म. तो फर्स्ट मैकेनिज्म क्या है कि इफ योर बॉडीज टेम्परेचर इज इंक्रीज, सपोज आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका है 37 डिग्री से ज़्यादा, तो व्हाट विल हैपन, बॉडी विल ट्राई टू डिक्रीज इट. नाउ हाउ बॉडी विल ट्राई टू डिक्रीज. अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका है तो बॉडी कम करने का ट्राई करेगी. उसको कैसे करेगी, कम करने का ट्राई. तो बॉडी विल कॉज क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन. क्या करेंगे, कौन सा डायलेशन, क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन. ठीक है, तो क्यूटेनियस मतलब क्या, आपकी जो स्किन है उसके नीचे जो ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट करेगी. तो क्यूटेनियस ब्लड वेसल डायलेशन. So body will try to decrease the body temperature by dilation of blood vessel, cutaneous blood vessel, है ना. And body will increase the sweat gland activity, है ना. Body will increase the sweat gland activity, है ना. तो बॉडी क्या करेगी, cutaneous vasodilation करेगी ताकि मैक्सिमम हीट लॉस हो सके.
तो cutaneous vasodilation result in the loss of heat from your body to the environment, है ना. आपको कभी कभी गर्म महसूस होता है ना, तो that result in the loss of heat. Then increase in the sweat gland activity, मतलब है आपका जो स्वेट ग्लैंड है, तो आपको जब बुखार आएगा तो स्वेटिंग ज़्यादा होगा. क्यों स्वेटिंग ज़्यादा होता है? बिकॉज देर इज इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड व्हेन योर बॉडी टेम्परेचर इज मोर देन नॉर्मल, सो दैट देर विल बी रिलीज ऑफ स्वेट ऑन योर स्किन. स्किन के ऊपर क्या होगा? स्वेट रिलीज होगा, स्वेट प्रोड्यूस होगा, एंड दैट हीट विल बी यूटिलाइज्ड टू इवेपोरेट दैट स्वेट, so that your body's heat will decrease, है ना. So cutaneous vasodilation and increase in the sweat gland activity will decrease your body temperature. That is due to the sympathetic cholinergic fibers. मतलब body will try to decrease the body temperature. How? By stimulating the sympathetic cholinergic fiber, and that leads to vasodilation, cutaneous vasodilation, and increase in the sweat gland activity. अभी मान लीजिए ये टेम्परेचर आपका बढ़ चुका है, तो ये कम करेगी बॉडी. नाउ इफ योर बॉडी टेम्परेचर इज लेस, आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है? कम हो चुका है, मतलब मोर देन लेस देन नॉर्मल. इफ योर बॉडी टेम्परेचर इज लेस देन नॉर्मल, बॉडी विल ट्राई टू इंक्रीज इट, है ना. अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो बॉडी कम करेगी, अगर कम है तो बॉडी बढ़ाएगी ना. बॉडी बढ़ाएगी कैसे भाई? तो बॉडी विल ट्राई टू इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, दैट इज ब्रॉट आउट बाय हाइपोथैलेमस. तो अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, so hypothalamus will be stimulated. So in the hypothalamus you have temperature regulating center. In the hypothalamus you have temperature regulating center, so that will reduces the heat loss. अगर बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी कम है तो हीट लॉस क्या होगा? कम होगा. हाउ हीट लॉस इज प्रिवेंटेड? बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग द पेरिफेरल ब्लड वेसल. यहाँ पे हीट लॉस बढ़ रहा था क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा था बॉडी का, तो हीट को लॉस हो रहा. यहाँ पे टेम्परेचर नहीं तो हीट लॉस प्रिवेंट होगा. तो हीट लॉस इज प्रिवेंटेड बाय हाइपोथैलेमस बाय वैसोकंस्ट्रिक्शन, डूइंग द पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन और क्यूटेनियस वैसोकंस्ट्रिक्शन, एंड इंक्रीज इन द हीट प्रोडक्शन. इंक्रीज इन द हीट प्रोडक्शन, इंड्यूसिंग द शिवरिंग, बाय इंड्यूसिंग द शिवरिंग. हीट प्रोडक्शन कैसे होता है? बाय इंड्यूसिंग द शिवरिंग. देखो आप जब आपको ठंड लगती है ना, तो आपको ठंड जब लगती है तो आपके पूरे शरीर के बाल ऐसे स्ट्रेट हो जाते, इरेक्ट हो जाते, खड़े हो जाते. क्यों? दैट इज नोन एज शिवरिंग. आप है ना ऐसे ऐसे करते हो. व्हाई? टू इंक्रीज योर बॉडीज कोर टेम्परेचर. सो इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी कि अगर बॉडी इफ देयर इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी, बॉडी विल ट्राई टू डिक्रीज इट by cutaneous vasodilation or increasing the sweat gland activity. If your body temperature is less than normal, your body will try to increase that by peripheral vasoconstriction and inducing the shivering and decreasing the activity of sweat gland. That's how it is controlled. Okay. You can see over here, that's how body's temperature is controlled. देखो so if your body temperature is high, say for example if your body temperature is, आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया? हाई हो गया, मतलब बढ़ गया. if your body temperature is high, pH लिखा है. so in that case what happens? Your hypothalamus, that is known as the temperature regulating center. In the hypothalamus you have temperature regulating center. तो बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस will send a signal. Hypothalamus will send a signal to your body. Hypothalamus will send a signal. Okay. Now what will happen? सबसे पहले क्या होगा? There is a vascular smooth muscle. There is a vascular smooth muscle dilation. Yeah. Peripheral blood vessel dilation, vasodilation होगा, right? So because of the vasodilation क्या होगा? There is a increased heat loss. So if there is a higher temperature, so there is a vasodilation, cutaneous vasodilation and increased heat loss. Again, when there is a higher temperature of body, so sweat gland activity will be increased, है ना. तो जो perspiration होगा that will be removed, जो आपको sweat मिलेगा,
sweat will be evaporated from your body by taking the heat, known as transpiration. So that's how body will try to decrease the temperature up to normal. Now suppose अगर आपका टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब बढ़ गया तो कम करेंगे. सपोज योर बॉडी टेम्परेचर इज लेस देन नॉर्मल. अगर टेम्परेचर लेस है, लेस देन नॉर्मल, so what will happen? Again hypothalamus is stimulated and that will signal to your body, कैसे करेगा? So it will cause peripheral blood vessel constriction. तो क्या होगा यहाँ पे? वैसो कंस्ट्रिक्शन. एंड देयर इज इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ मसल का एक्टिविटी बढ़ेगा, सो दैट प्रोडक्शन ऑफ हीट विल बी. देन अगेन ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो है आपका, इन दैट आल्सो दैट विल बी यूटिलाइज्ड, दैट विल बी ब्रोकन डाउन फॉर द हीट प्रोडक्शन. हीट प्रोडक्शन करेगा. हीट प्रोडक्शन कैसे होगा? बाय इंक्रीजिंग द मस्कुलर एक्टिविटी, बाय कंस्ट्रिक्टिंग द ब्लड वेसल. So that is due to noradrenergic sympathetic nervous system. That is brought about by noradrenergic sympathetic nervous system. मतलब क्या है? जब बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो एड्रेनर्जिक सिस्टम फ्लो आएगा और दैट विल इंक्रीज द vasoconstriction and decrease in the sweat gland activity, increase in the muscle activity, production of heat. जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा बॉडी का, so in that case parasympathetic or cholinergic system will be activated under the influence of hypothalamus, also known as central thermostat. इसको अपन बोलते हैं central thermostat, right? So that's how. And again body temperature is increased by shivering, है ना. आपके shivering मतलब क्या? आपके रोंगटे खड़े होना, है ना, आपके बाल खड़े होने. That is due to the somatic motor neuron. So heat loss will be prevented. So this is the mechanism of control of heat of your body, control of temperature of your body. तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फ्लो बढ़ जाएगा एंड vasoconstriction and increased sweat gland activity, that will decrease the body temperature. If body temperature is less, then adrenergic system will be activated and here vasoconstriction will be there, heat production will be there, shivering will be there, so that it will be raised up to the normal thermal comfort decision. So I hope you understood the mechanism of control mechanism of temperature of your body, right? Now drug which decreases your body temperature, drug which decreases your body temperature, known as antipyretic drug. Now you might know one term, pyrogens. आपने ये term सुना होगा, pyrogens. What are the pyrogens? Pyrogens are nothing but the metabolic product of your bacteria. Pyrogens are nothing but the metabolic product of bacteria. So they are the metabolic product of bacteria. And chemically, pyrogens are nothing but the lipopolysaccharide. Chemically, pyrogens are nothing but the lipopolysaccharide. Pyrogens are nothing but the lipopolysaccharide. Pyrogens means what? Pyro means fever. Pyro is the term for fever or temperature. So pyro and gens means causing. So pyrogens means temperature or fever causing agent. Pyrogens, they are the metabolic product of your bacteria and they are chemically lipopolysaccharides. Now they क्या करते हैं क्या? They will activate the mononuclear phagocyte. Mononuclear phagocytes मतलब आपका monocytes है. They will increase the monocytes. They will activate the monocytes and releases the one chemical known as interleukin-1. Interleukin. Pyrogens will increase the interleukin. They will increase the interleukin-1 chemical. They will release the interleukin-1 chemical from the monocytes and also stimulate the tumor necrosis factors. Tumor necrosis factor. TNF acts on, है ना, ये TNF जो है tumor necrosis factor. It will act on a vascular endothelium, मतलब inner layer of your blood vessel and stimulate the local synthesis of prostaglandins, particularly prostaglandin E, which causes the fever and anorexia. Anorexia मतलब बुखार वाला. जब आपको बुखार होता है तो आप खाने का मन नहीं करता ना. क्यों नहीं करता? Because prostaglandin E का प्रोडक्शन होता है, right? So pyrogens and also they will set your thermostat towards the positive side. मतलब आपका CNS में जो thermostat है वो भी पॉजिटिव कर देता है, right?
That's how particles will increase the body temperature. Now drug which decreases the body temperature is known as a antipyretic, right? Antipyretic. बेसिक क्लियर करना जरूरी है आपको, है ना. बेसिक ही मालूम है तो आपको ड्रग्स के बारे में समझ में नहीं आएगा. तो यू हैव टू अंडरस्टूड फर्स्ट बेसिक्स एंड देन ड्रग्स. ओके. नाउ इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन इज अ रिएक्शन ऑफ लिविंग टिश्यू टू द इंजुरी, है ना. इन्फ्लेमेशन इज अ रिएक्शन ऑफ योर बॉडी टू द इंजुरी or to the chemicals or to the irritant or to the infection. Now three more, okay, there are three important aspects of the inflammation. You can understand the inflammation. कैसे measure कर सकते हैं inflammation? There are three aspects of inflammation for measurement. First one is edema. Edema मतलब क्या? Local vasodilation. आपको समझ में कब आएगा कि inflammation है? Local vasodilation will be there, known as edema. Then edema मतलब क्या? सूजन. तो then edema मतलब क्या? सूजन कब होता है? When there is a increased permeability of blood vessel. When there is a vascular permeability increased, edema, and then formation of granulation tissue known as inflammation. तो inflammation के aspect होते हैं. There are three main aspects of inflammation. Inflammation के aspects होते हैं. There are three main aspects of inflammation. क्या है आपका? erythema means local vasodilation, then edema मतलब है ना increase the permeability, and third one is nothing but the formation of granulation tissue, right? Now mechanism of NSAIDs. mechanism क्या है इनका? during the inflammation क्या होता है? during the inflammation and fever, what happens? So inflammation is due to the microbial infection or some irritant chemical or because of the injury to your tissue. So during that fever, arachidonic acid. So arachidonic acid क्या है? It is a 20 carbon containing fatty acid. Arachidonic acid is liberated. It is released. It is released from the phospholipid fraction of your cell. मतलब मान लीजिए कि आपने बाइक के ऊपर आपके दोस्त के साथ आप जा रहे हो, है ना, एंजॉय करते करते जा रहे हो, है ना. आप क्या कर रहे हो? दोस्त के साथ में एंजॉय करते करते जा रहे हो, और बीच में आप क्या हो गए, है ना, बीच में रोड पे आप फैल गए, मतलब गाड़ी से गिर गए. आप गिरने के बाद आपको थोड़ा सा बहुत स्क्रैचेस वगैरह आ गए, मान लीजिए आपको थोड़ा बहुत लगा. तो वो जो है ना, वो लगने के बाद में क्या है? देयर इज अ ट्रॉमा टू योर टिश्यूज. ट्रॉमा हो गया मतलब क्या? सो योर सेल or tissue are damaged. That means your cell membrane is broken. So that cell membrane is broken, and now if there is trauma, so there is a activation of one enzyme known as a phospholipase A2. वहाँ पे phospholipase A2 act होगा, and phospholipase A2 will break down the phospholipids of your cell membrane, and they will break down the phospholipids of cell membrane, and they will increase the production of this arachidonic acid. Now this arachidonic acid is converted into अभी जो ये arachidonic acid है, that is a 20 carbon containing fatty acid liberated from your phospholipid fraction of your cell membrane, that is converted into prostaglandins and leukotrienes. ना ये जो arachidonic acid है, that is converted into prostaglandins and leukotrienes. So arachidonic acid is converted into prostaglandins by the enzyme COX-1 and COX-2, known as the cyclooxygenase pathway. This arachidonic acid has a two fate that is converted into prostaglandins, thromboxane, prostacyclins by COX pathway, cyclooxygenase pathway, COX-1 and COX-2. And another arachidonic acid is also converted into leukotrienes by another pathway, LOX pathway. I will explain in upcoming slide. Don't worry. Now prostaglandins, they will sensitize, and PG मतलब क्या? prostaglandins, they will sensitize the blood vessel to the effect of other inflammatory mediators. मतलब बाकी जो inflammatory mediators है उसके लिए भी sensitize करेंगे, and खुद prostaglandins क्या करते हैं? inflammation करते हैं. So
themselves prostaglandins, they are inflammatory, they will increase the body temperature and also sensitize the blood vessels for other mediators. They will increase the permeability of blood vessels so that they can cause edema and edema, right? Now there are 3 isotypes of cyclooxygenase. यहाँ पे कॉक्स के कितने एंजाइम है? 3 एंजाइम. याद रखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, राइट? There are 3 cyclooxygenase, isoenzymes of cyclooxygenase. First one is COX-1. पहला है आपका COX-1. There are 3 cyclooxygenase isoenzymes. एंजाइम के ही आइसोएंजाइम मतलब क्या? एंजाइम के टाइप. एक ही एंजाइम है साइक्लोऑक्सीजनेस, उसका 1 2 3, तो उसकी क्या है? आइसोएंजाइम्स. तो आइसोएंजाइम्स आर नथिंग बट द टाइप्स ऑफ दैट एंजाइम. So COX means cyclooxygenase. So there are 3 isotypes: COX-1, COX-2, COX-3. So what is the role of COX-1? ठीक है, COX-1 activity or COX-1 is present in the all cell and tissue, है ना? तो COX-1 कहाँ पे होता है? COX-1 is present in the nearly all cells. COX-1 is present in the all cells. And remember, very important question already आ चुका है. COX-1 is a constitutive enzyme. COX-1 is a constitutive enzyme. COX-1 is a constitutive enzyme. It has a housekeeping role. What is the role of COX-1? Housekeeping. यहाँ पे लिखता हूँ मैं, है ना? यहाँ पे है. It has a housekeeping role or housekeeping function. Housekeeping function मतलब क्या है ना? मतलब आप अपना घर अच्छे से रखते हो ना, हाउसकीपिंग, है ना? आपके घर में कचरा पड़ा है, आप नहीं पड़ने देते, आप हटा दे उसको. हाउसकीपिंग मतलब क्या? सो इफ देयर इज इंजुरी टू योर, है ना, इंजुरी टू योर सेल एंड टिश्यू, अगर आपके सेल टिश्यू को इंजरी होता है तो COX-1 का काम है वहाँ पे इंफ्लेमेशन प्रोड्यूस करना और वो टिश्यू रिपेयर करना. सो व्हाट इज द रोल ऑफ COX-1? COX-1 is having very important role of housekeeping. It is a constitutive enzyme. It is a physiological enzyme. यहाँ पे 2-3 वर्ड याद रखो. COX-1 is a physiological. ये लिखता हूँ मैं यहाँ. COX-1 is a physiological enzyme. COX-1 is having housekeeping function. COX-1 is a constitutive enzyme. Constitutive or constitutive enzyme, है ना? Involved in the tissue hemostasis, मतलब क्या? टिश्यू रिपेयर. इन्वॉल्व इन द टिश्यू रिपेयर. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, है ना? आपको अगर कोई खरोच आती है तो वो 8-10 दिन में वो खरोच क्या होती है? ठीक हो जाती है, उसके ऊपर नया सेल आता है. वो काम किसका है? COX-1 का है. तो COX-1 इज हैविंग हाउसकीपिंग फंक्शन, इन्वॉल्व इन द टिश्यू रिपेयर एंड इट इज अ कंस्टिट्यूटिव एंजाइम प्रेजेंट इन द ऑल सेल्स एंड टिश्यू. मतलब एक्टिविटी ऑफ COX इज प्रेजेंट इन द ऑल सेल एंड टिश्यू. ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. नेक्स्ट आता है COX-2. COX-2 और cyclooxygenase 2. COX-2 is normally absent from the cell. यहाँ पे देखो अंडरलाइन किया है. एक्टिविटी ऑफ COX-2 एक्टिविटी नॉर्मली absent in the cell. COX-2 एक्टिविटी कहाँ पे absent होता है? सेल्स में. बट COX-2 is present in the kidney and brain. But normally from other cells COX-2 is absent. The activity of COX-2 is absent, but in case of inflammation, so it is increased. In case of inflammation, the COX-2 activity is increased. COX-2 का activity increase होता है, कब होता है? inflammation में, right? But this enzyme और COX-2 is inducible. COX-2 क्या है? inducible है. inducible. अभी ये जो वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे inducible, इसी के ऊपर अभी तक 4 बार क्वेश्चन आ चुका. Which cyclooxygenase is inducible? COX-2 is inducible. Which COX is a constitutive? COX-1 is a constitutive. ये 2 वर्ड्स के ऊपर ही क्वेश्चन आ चुके. COX-1 is having constitutive. It is a constitutive. It is a physiological enzyme having housekeeping function. COX-2 is inducible. In case of inflammation, COX-2 का एक्टिविटी बढ़ जाता है and COX-2 is induced by the lipopolysaccharides. COX-1 is induced by the pyrogens and interleukin-2 tumor necrosis factor. So these are the some inflammatory chemicals. They will induce the COX-2.
and activated lymphocytes and other inflammatory cell. मीन्स क्या, COX2 इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल, COX2 इज अ पैथोलॉजिकल. ठीक है, COX1 क्या है फिजियोलॉजिकल, COX2 क्या है पैथोलॉजिकल. क्यों पैथोलॉजिकल है? बिकॉज जब इंफ्लेमेशन होता है तभी COX1 का एक्टिविटी आता है, अदरवाइज नॉर्मली एब्सेंट होता है. नॉर्मली एक्टिविटी ऑफ COX2 इज एब्सेंट, बट इन केस ऑफ inflammation the activity is increased, so it is inducible. The COX2 activity is induced by pyrogens interleukin 2 TNF activated lymphocytes and inflammatory cell. Okay, COX2, so that's why COX2 is inducible, it is a pathological. इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाए. Now there is one more known as a COX3. There is one more known as a COX3. COX3 is present in the brain. याद रखना है, COX3 is present in the brain. It is present in the brain. It is present in the brain and responsible for the temperature regulation. Now pyrogens will interact with the COX3 and will increase the temperature. So body temperature कौन increase करता है? COX3, because of the stimulation of COX3, है ना. So remember paracetamol जो ड्रग है आपका, paracetamol is a selective COX3 inhibitor. Paracetamol inhibits the COX3 in the brain and decreases the body temperature. Paracetamol also inhibits the COX1 and COX2 non-selectively. So paracetamol क्या है? Paracetamol is a non-selective COX inhibitor in the periphery, in the periphery outside the CNS. So it inhibits COX1 and COX2. So it is known as a non-selective inhibitor. है ना. आपके 3 दोस्त थे, है ना, आपके क्या है कि 3 दोस्त थे, तो आप तीनों के साथ में इक्वली इंटरेक्ट करते हो, इक्वली बातें करते हो, तीनों के साथ बात करना आपको पसंद है ना. आपके 3 दोस्त है, आप तीनों के साथ में अच्छे बिहेव करते हो, दैट इज अ नॉन सिलेक्टिव. इसको बोलेंगे अपन नॉन सिलेक्टिव. बट आपको 2 नंबर का जो दोस्त है उसके साथ में बातें करना पसंद है ना. तीनों के साथ में बात करते हो, लेकिन ज्यादा बात आप 2 नंबर के दोस्त के साथ करते हो, तो उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल. नहीं, या समझ लो, यहाँ पे दिमाग में घुसा लो इसको. देयर आर 3 फ्रेंड्स, है ना, आपके जैसे आपके 3 दोस्त है, एक का नाम है मनोज, एक का नाम है विनोद, एक का नाम है ना कल्पेश. मनोज, विनोद, कल्पेश नाम के 3 दोस्त है. आप तीनों के साथ में आप तीनों के साथ में बातें करते हो, तीनों के साथ में इक्वली बिहेव करते हो, तो दैट इज नोन एज अ नॉन सिलेक्टिव. सो यू आर इंटरेक्टिंग विद योर 3 फ्रेंड्स नॉन सिलेक्टिवली, यू आर इंटरेक्टिंग इक्वली, है ना. कल्पेश हो गया, विनोद हो गया, मनोज हो गया, तो ये तीनों के साथ में बातें करते हो आप, नॉन सिलेक्टिव, है ना. बट आपको कल्पेश के साथ में बात करना ज्यादा पसंद है. तीनों में से आपको कल्पेश के साथ में बात करना ज्यादा पसंद है. तीनों से बात कर रहे हो, आप करते हो बात, तीनों से भी बात करते हो, झगड़ा किससे नहीं आपका, बट कल्पेश से ज्यादा बात करने का मन करता है आपका, है ना. कल्पेश से ज्यादा अट्रैक्टिव है. सो दैट इज नोन एज अ प्रेफरेंस. सो यू आर गिविंग प्रेफरेंस टू द कल्पेश. सो है ना, दैट इज अ प्रेफरेंस. एंड इफ यू आर ओनली इंटरेक्टिंग विद द, है ना, ओनली इंटरेक्टिंग विद द आइदर मनोज, आइदर विनोद और आइदर कल्पेश, तो तीनों में से सिर्फ आप विनोद से ही बात कर रहे हो अकेले से, तो उसको बोलेंगे सिलेक्टिव. या फिर मनोज से ही बात कर रहे हो सिर्फ, तो उसको बोलेंगे सिलेक्टिव. या फिर तीनों में से सिर्फ आप मनोज से ही बात कर रहे हो तो सिलेक्टिव. तीनों में से सिर्फ आप विनोद से बात कर रहे हो, सिलेक्टिव, है ना. तीनों में से आप कल्पेश से बात कर रहे हो, नॉन एज सिलेक्टिव, है ना. तो सिलेक्टिव मीन्स व्हाट? सो इट विल इंटरेक्ट विद द स्पेसिफिक. नॉन सिलेक्टिव मीन्स व्हाट? इट विल इंटरेक्ट विद द ऑल. एंड प्रेफरेंशियल मीन्स व्हाट? विल हैव मोर इंटरेक्शन विद द पर्टिकुलर, है ना. तो दैट्स व्हाई यहाँ पे 3 टाइप के क्लासेस ड्रग होते हैं, है ना. नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, so they will inhibit COX1 and COX2. Preferential COX2 inhibitor means what? They will inhibit the COX2 more than COX1. Preferential COX2 inhibitor, and then selective COX2 inhibitor means only inhibit the selective COX, and selective COX3 inhibitor मतलब only inhibit the COX3. तो देखो यहाँ पे नॉन सेलेक्टिव COX inhibitor मतलब क्या? They will inhibit the COX1, COX2, है ना. Now preferential COX2 inhibitor मतलब क्या है ना? Preferential COX2 means they will inhibit the COX2 more than COX1, है ना. COX1 से ज्यादा COX2 को inhibit करेंगे, बट COX1 को भी करते हैं. सो प्रेफरेंस किसको है? COX2 को. दैट्स व्हाई प्रेफरेंशियल COX2. एंड दोज inhibit COX3, जैसे पैरासिटामोल inhibit the selectively COX3, तो selective.
सम ड्रग ओनली इनहिबिट द COX-2 selectively, known as selective COX-2 inhibitor. यहाँ पे 3 क्लासेस है, नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर, प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर, सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, सिलेक्टिव COX-3 इनहिबिटर, मतलब 4 क्लासेस हो जाते हैं. एग्जांपल अपन देखेंगे बाद में, राइट. So you just have to understand the concept over here, right? Now we'll see the next part. देखो यहाँ पे when there is a cell injury, suppose आपके सेल को इंजरी हुआ है, suppose there is a damage to your cell or tissue. जैसे मैंने बोला है कि आप बाईक मी सांगितलं, जसं तुम्ही 2 मैत्रिणी स्कूटीवर चालल्या आणि स्कूटीवर चालल्या आणि तुम्ही रस्त्यावर सांडल्यानंतर तुम्हाला काय होतं, इंजुरी होती. सो सेल इंजुरी, राइट. सेल इंजुरी and cell injury leads to damage of your कोण आहे ठेवून द्यायचं. So cell injury will damage your cell membrane, and damaged cell membrane means cell membrane is made from lipids. So one of the is a phospholipid. तुम्हाला काय OTP सांगायचं आहे का? OTP सांगायचा आहे का तुम्हाला? 145 120 145 120 145 120. हो ठेवा. So whenever there is a cell injury to your tissue or tissue injury cell injury, so there is a damage of your cell membrane. Cell membrane damage हो गया. So there is a activity of one enzyme. एक enzyme release हो, कौन सा? So there will be release of this phospholipase A. Oh, 120. सेल इंजर्ड हो गया, टिश्यू इंजर्ड हो गया, तो आपका सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गया. सो देयर इज अ रिलीज ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. तो दैट फॉस्फोलिपिड्स आर ब्रोकन डाउन बाय फॉस्फोलाइपेज A2. तो यहाँ पे एक एंजाइम रिलीज होगा, उसको बोलेंगे फॉस्फोलाइपेज A2, है ना. फॉस्फोलाइपेज A2, फॉस्फोलाइपेज A2. So cell injury, release of phospholipid. Now these phospholipids are broken down, they are metabolized, they are converted into arachidonic acid. So phospholipids are converted into arachidonic acid by the enzyme known as phospholipase A2. क्या नाम है इसका भाई? Phospholipase A2. खतरनाक है, ये important है, right? Now phospholipase A2 will convert phospholipids into arachidonic acid. So arachidonic acid is a 20 carbon containing fatty acid. ये क्या है? 20 carbon containing cyclic fatty acid. कौन सा? 20 carbon atom containing cyclic fatty acid. Now arachidonic acid is taken by one enzyme known as cyclooxygenase. So arachidonic acid is converted into prostaglandins and thromboxane. Cyclooxygenase will convert prostaglandins into, cyclooxygenase will convert arachidonic acid. जो arachidonic acid है आपका, this arachidonic acid is converted into prostaglandins, leukotrienes and thromboxane A2. देखो arachidonic acid is through a cyclooxygenase pathway. Arachidonic acid and on one hand, ये आप देखो एक, there are two possibility. Now this arachidonic acid has a two fate. Arachidonic acid has a two fate. First way is arachidonic acid is converted into prostaglandins, prostaglandins and thromboxane via cyclooxygenase pathway. देखो यहाँ पे cyclooxygenase, है ना. Arachidonic acid is converted into prostaglandin I2. Arachidonic acid is converted into prostaglandin I2 by the enzyme prostaglandin synthetase. तो ये जो 20 कार्बन वाला एसिड है, that is converted into prostaglandin by the prostaglandin synthetase via COX pathway. ठीक है. Then again this arachidonic acid is also converted into prostacyclin synthetase. Prostacyclin क्या होता है? PGI2, right? So prostacyclin synthetase will convert arachidonic acid into prostacyclin I2. Then again arachidonic acid is also converted into thromboxane A2
Arachidonic acid is also converted into thromboxane A2. देखो यहाँ पे thromboxane A2 है, thromboxane A2 by the enzyme thromboxane synthetase. This arachidonic acid, and this pathway is known as a COX pathway. This pathway is known as a COX pathway or cyclooxygenase pathway. तो मतलब सिंपल क्या है कि इसका सारा एराचिडोनिक एसिड इज कन्वर्टेड टू प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 वाया कॉक्स पाथवे, बस ठीक है. देन एट अनदर एंड, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, एट अनदर एंड, तो अनदर पॉसिबिलिटी इज देयर. तो एट अनदर एंड दिस साइक्लोऑक्सीजन, ओके, दिस एराचिडोनिक एसिड इज कन्वर्टेड टू ल्यूकोट्राइन्स है ना. एराचिडोनिक एसिड इज कन्वर्टेड टू ल्यूकोट्राइन्स बाय द एंजाइम known as the LOX. यहाँ पे LOX होता है, LOX, LOX. मतलब लिपोऑक्सीजनेस पाथवे. तो वाया लिपोऑक्सीजनेस पाथवे है ना, arachidonic acid is converted to leukotrienes. Now these leukotrienes, they will act on their receptor like leukotrienes A4, B4, C4, D4. They will act on their leukotriene receptor and they will cause bronchoconstriction, मतलब अस्थमा. They can cause asthma. They can cause asthma. मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको फिर से एक बार बोलता हूँ मैं शॉर्ट. तो whenever there is a cell injury, आपके सेल टिश्यू को इंजरी हो गया, तो there is a damage to your phospholipid membrane and there is a increased activity of phospholipase A2. यहाँ पे phospholipase A2 एक्टिवेट हो जाएगा. Phospholipase A2 will break down this phospholipid and convert into arachidonic acid, which is 20 carbon cyclic fatty acid. Now this arachidonic acid is converted into different inflammatory mediators or inflammatory chemicals. The arachidonic acid is converted into inflammatory chemicals by two pathway. पहला pathway is cyclooxygenase pathway known as a COX pathway, COX pathway. So arachidonic acid is converted into prostaglandins है ना, then prostacyclins, then thromboxane via COX pathway. Then arachidonic acid is also converted into leukotrienes via LOX pathway, मतलब lipoxygenase pathway. Now these chemicals, they can cause inflammation, pain and fever है ना. And this thromboxane A2, and they are responsible for the platelet aggregation. thromboxane A2 क्या करेगा, प्लेटलेट का एग्रीगेशन करेगा. प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इन्फ्लेमेशन करेंगे, इडियमा करेंगे, राइट. नाउ सो दिस पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन, इन्फ्लेमेशन एंड फीवर, राइट. नाउ दिस पाथवे यहाँ पे जो बना है आपका ल्यूकोट्राइन्स, सो दिस ल्यूकोट्राइन्स विल कॉज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एंड अस्थमा. दिस पाथवे इज रिलेटेड विद द अस्थमा. This pathway is related to the asthma or bronchoconstriction. So drugs which inhibit the COX, जो भी drugs COX को inhibit करता है, drug which inhibit the COX, example is your NSAIDs. NSAIDs will inhibit the COX and they are known as analgesic, antibiotic and anti-inflammatory drugs. Those drugs which inhibit the LOX है ना, they are known as anti-asthmatic drugs. जैसे lipoxygenase inhibitor होता है जिलोटॉन is an anti-asthmatic drug, और leukotriene antagonists also they are anti-asthmatic drug. And again drug which inhibit this enzyme phospholipase A2, so they are known as steroids. तो steroids होते हैं आपके, steroids will inhibit the glucocorticoids or steroids will inhibit the phospholipase A2. So steroidal anti-inflammatory drug क्या है, so steroidal drug they are anti-inflammatory also and asthmatic also, anti-asthmatic. So देखो आपको जो dexamethasone, prednisolone, triamcinolone, these the kind of drug, when we will see the steroid at that time I will explain. These steroidal drug are used as a anti-asthmatic drug as well as anti-inflammatory drugs, but जो NSAIDs है they are only used as anti-inflammatory and antipyretic है ना. जो LOX inhibitor होते हैं जिलोटॉन वगैरह, they are used as anti-asthmatic, right. So I hope you are getting my points. Okay. You can see over here same thing, let's say membrane phospholipids. So membrane phospholipids. When there is an injury, so there is a release of membrane phospholipids, so there is activation of phospholipase A2. Phospholipase A2. So that will convert membrane phospholipid into arachidonic acid.
तो एराचिनोइक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन वाया कॉक्स पाथवे, right? Prostaglandins, then prostacyclins and thromboxane. So arachidonic acid is converted into prostaglandin, prostacyclin, thromboxane E2. So these prostaglandins क्या करेंगे? They will cause pain, inflammation, edema. This will cause platelet aggregation and clotting formation. Okay. Now drug which inhibit this pathway, they are known as a COX inhibitor. And they are used as a NSAIDs. They are known as NSAIDs, analgesic, antibiotic, anti-inflammatory. So they will inhibit this COX and will prevent the pain, inflammation, and fever. Now, arachidonic acid is also converted into leukotrienes. ये जो arachidonic acid है आपका, ये कहाँ पे कन्वर्ट होता है? leukotrienes में. leukotrienes. तो leukotrienes कौन कन्वर्ट करता है? LOX, phyolipoxygenase. There is one enzyme known as phyolipoxygenase. So that will convert arachidonic acid into leukotrienes. Now these leukotrienes, they will act on their receptor known as leukotriene cysteine receptor, right? And will cause bronchoconstriction. Now this pathway is inhibited by xylitol. xylitol नाम का जो ड्रग है, that is a LOX inhibitor. इसके ऊपर कम से कम 3 बार क्वेश्चन आ चुका है. Phyolipoxygenase inhibitor is xylitol, and then leukotriene receptor inhibitor. ये जो रिसेप्टर है उसको भी इनहिबिट कर सकते हो आप. leukotriene receptor inhibitor known as a CAST, Montelukast, Zapirlukast. These drugs are used as a drug used in the asthma. Xylitol, Montelukast, Zapirlukast, they are used in the asthma. है ना? Bronchoconstriction leads to asthma and they are used as a painkillers. यहाँ पे क्या है? NSAID मतलब क्या? Analgesics, Antipyretics and anti-inflammatory. So these COX inhibitors are used as analgesic, antipyretic and anti-inflammatory. LOX inhibitors are used as a anti-asthmatic drug. And those drugs which inhibit this phospholipase A2, this is steroidal drug, है ना? जैसे आपका बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, प्रेगनिसोलोन, ट्राइमसोलोन, तो they are known as a phospholipase A2 inhibitor. जितने भी steroidal anti-inflammatory drugs है, so those steroidal anti-inflammatory drugs, they are a phospholipase A2 inhibitor, and that's why these steroids are used for both inflammation as well as asthma. ये इसमें है ना, inflammation में यूज करेंगे and asthma में भी यूज करेंगे, because it will inhibit the phospholipase A2. That's why will prevent the production of COX and LOX, है ना, COX and LOX. That's why steroidal anti-inflammatory drugs, they are used for both asthma as well as inflammation, है ना. But है ना, जो drugs known as a COX inhibitor, so drugs which are a COX inhibitor, the drugs which inhibit the COX, that is NSAID, they are only used as analgesic, antipyretic, anti-inflammatory. तो ये analgesic, antipyretic, anti-inflammatory होते हैं. Now due to inhibition of COX, अभी देखो यहाँ पे एक फंडा है, inhibition of COX, है ना, inhibition of COX enzyme by NSAIDs. NSAIDs ने क्या किया? COX को इनहिबिट किया, तो क्या होगा? ये पाथवे ब्लॉक हो जाएगा. This is a blockage of this pathway. NSAIDs will block this pathway. So what happened? Arachidonic तो acid तो है, so arachidonic acid is there, है ना. देखो समझ लो, important है यहाँ पे. NSAIDs will block the COX pathway and that's why arachidonic acid is converted to leukotrienes. तो यहाँ पे COX pathway ब्लॉक हो चुका है by using NSAIDs. तो यहाँ पे जो arachidonic acid है, this arachidonic acid is converted into leukotriene. तो यहाँ पे there is a formation of more leukotrienes. There is formation of more leukotrienes and that will cause bronchoconstriction, है ना. तो मतलब क्या कि NSAIDs will promote the asthma. NSAIDs will can cause use of NSAIDs can cause bronchoconstriction. NSAIDs can cause bronchoconstriction. क्यों? Because of the blockage of COX. Because of the blockage of COX pathway. So that arachidonic acid is converted to LOX and that is converted to leukotrienes and that can cause asthma. So most of the NSAIDs they will aggravate the asthma. जिसको अस्थमा है उसमें अगर एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक ड्रग देंगे तो अस्थमा ज़्यादा हो सकता है, राइट.
सो आई होप यू आर अंडरस्टूड। अभी स्ट्रेंथ कम हो गया, मतलब 5 चीजें नहीं है ना। मतलब कहाँ पे जाना पड़ता है यार, आपको डांडिया खेलना ज़्यादा पड़ता है क्या? डांडिया इंपॉर्टेंट है, लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो है ना। मैं यहाँ पे जान खा खा के मेरे को बोलने नहीं आ रहा है। आई एम सफरिंग फ्रॉम, है ना, कफ। स्टिल आई एम टेकिंग द लेक्चर्स। मैं यहाँ पे मेरा मुझे कफ है, सर्दी है, खांसी है, फिर भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ। और मतलब 5 जना भी अभी धीरे धीरे कम हो गए। पहले 10-15 लोग थे, अभी कम हो गए, है ना। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा आपको, या फिर मैं पागल हूँ, है ना। मुझे क्या है, मैं ले लूंगा, एक भी बच्चा रहा तो मैं ले लूंगा, कोई नहीं रहा तो भी ले लूंगा। मैं क्या रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है चीजें यार, इसके पैसे देते हैं लोग मुझे बहुत सारे। नाउ very very important classification of analgesic antibiotic. Classification of very very important classification of non-steroidal anti-inflammatory drugs. Classification of NSAIDs, right? Now, as I told you, these analgesic antibiotic, they can be classified into 3 types. Analgesic antibiotic, they can be classified into 3 ways. 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो आप उसको। तो फर्स्ट, classification based upon the mechanism of action. Classification based upon the mechanism of action. Second, classification based upon the chemistry. The second one is a chemical classification. It can be classified into 2 major categories. पहला होता है classification based upon the classification based upon the mechanism of action, classification based upon the chemistry, और classification based upon the mechanism of action. फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास कौन सा है भाई? नॉन सिलेक्टिव कॉक्सिनेट, फर्स्ट क्लास नॉन सिलेक्टिव कॉक्सिनेट। इन दैट नॉन सिलेक्टिव कॉक्सिनेट मतलब क्या? दे विल इनहिबिट कॉक्स 1 एज वेल एज कॉक्स 2। तो इसमें देखो, पहला क्लास है सैलिसिलेट, बेस्ड अपॉन द केमिस्ट्री। फर्स्ट क्लास इज सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, एग्जांपल इज एस्पिरिन, मिथाइल सैलिसिलेट, है ना, मिथाइल सैलिसिलेट, एस्पिरिन, देन बेनोइलिलेट, सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट, एसिटिक एसिड एंड बेनोइलिलेट, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव। देन सेकंड क्लास इसमें प्रोपाइनिक एसिड डेरिवेटिव, प्रोपाइनिक एंड प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव also known as a phenamic acid derivative, also known as a, है ना, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, और also known as a प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। देखो इसमें आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोपेन, देन फ्लुबिप्रोपेन, फ्लुबिप्रोपेन, देखो आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोपेन, फ्लुबिप्रोपेन। So this flurbiprofen is used as an ocular anti-inflammatory. The ocular anti-inflammatory. It is an ocular anti-inflammatory. Flurbiprofen, याद रखना है ना, flurbiprofen. So that is used as an ocular anti-inflammatory. मतलब आइज के लिए इन्फ्लेमेशन। तो प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोपेन, फ्लुबिप्रोफेन। देन थर्ड क्लास में है फेनामिक एसिड डेरिवेटिव और फेनाइट, फेनामिक एसिड डेरिवेटिव और फेनामेट, फेनामिक एसिड डेरिवेटिव और फेनामेट। इसमें आता है मेपेनेमिक एसिड एंड फेनफेनामिक एसिड, है ना, फेनफेनामिक एसिड एंड मेपेनेमिक एसिड। So they are used for the dysmenorrhea. They are used for the dysmenorrhea. Okay? Then enolic acid derivative, ना, और इसको बोलते हैं ऑक्सीकैम्स, इसको बोलते हैं ऑक्सीकैम्स, enolic acid derivative or also known as oxycams. In that paroxycam, tenoxycam and meloxycam, meloxycam भी, meloxycam यहाँ पे अलग कैटेगरी में डाला है, we'll see. Paroxycam, tenoxycam, meloxycam, they are enolic acid derivative. Then next आता है acetic acid derivative. So it is also known as aryl acetic acid derivative, aryl acetic acid. So example is a ketorolac, indomethacin, nabometone,
and diclofenac is also aralacitic acid derivative. The diclofenac is considered over another category. Then pyrazolone derivative इसमें आता है phenylbutazone, oxyphenbutazone. Oxyphenbutazone is a active metabolite of phenylbutazone. Okay, this is a non-selective COX inhibitor. Means they will inhibit COX1 and COX2, and they will prevent the formation of prostaglandins. है ना, तो prostaglandins का formation inhibit करते हैं, right? तो prostaglandin सिर्फ bad है क्या? नहीं. Prostaglandin is also important compound in the body. Prostaglandins का रोल भी important है. क्या रोल है? Right? So prostaglandin is having very important role in the testes, you know, so in the prostate gland. So it will increase the thickness of your sperm, it will increase the nourishment of your sperm. So analgesic antibiotic will decrease the your sperm formation and will cause impotence also upon long term use. ठीक है, तो यहाँ एडवर्स पे भी कैसे आ सकते हैं आपको याद रखना है. नाउ prostaglandins again are very very important for, you know, for क्लोजिंग ऑफ डक्टस आर्टरोसिस. अपने ही बात इसके बारे में बाद में करेंगे बात, यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन लिखेंगे, राइट. तो दिस इज द फर्स्ट क्लास. और सेकंड क्लास क्या है आपका? सेकंड क्लास इज नथिंग बट द प्रेफरेंशियल COX-2 inhibitor. सेकंड क्लास इज नथिंग बट द second class preferential COX-2 inhibitor. So they will inhibit COX-2 more than COX-1. तो इसके ऊपर GPAT 2022 में क्वेश्चन आ चुका है ना, क्लासिफिकेशन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर. तो सेकंड ये क्लासेस मतलब ये तीनों ड्रग के एग्जांपल दिए थे और GPAT 2022 में आ चुका. प्रेफरेंशियल COX-2 inhibitor एग्जांपल इज निमेसुलाइड प्रेफरेंशियल COX-2 inhibitor, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, मेलॉक्सिकैम एंड इटोडोलैक. तो GPAT 2022 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, प्रेफरेंशियल COX-2 inhibitor. इसके ऊपर तो बहुत बार आ चुके हैं बट ये भी GPAT 2022 में, राइट. तो प्रेफरेंशियल COX-2 inhibitor निमेसुलाइड, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, मेलॉक्सिकैम एंड इटोडोलैक. They are the preferential COX-2 inhibitor. Means they will inhibit COX-1 as well as COX-2, but they will inhibit more COX-2. Their preference is for COX-2. So preferential मतलब they will prefer COX-2 more than COX-1. That's why preferential. Non-selective means they will inhibit COX-1 as well as COX-2. Now third class is nothing but the selective COX-2 inhibitor. Third class देखो यहाँ पे तीसरा class selective COX-2 inhibitor. They will inhibit only COX-2. So all COXIPs, this is Celecoxib, Heterocoxib, Pericoxib. All COXIPs are nothing but the selective COX-2 inhibitor. They will inhibit only COX-2, selective COX-2 inhibitor. इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं. Selective COX-2 inhibitor. All COXIPs, Celecoxib, Heterocoxib, Pericoxib, they are the selective COX-2 inhibitor. Now all these non-selective and preferential and selective. Non-selective COX inhibitor, preferential COX inhibitor, selective COX-2 inhibitor, they are good analgesic, antibiotic as well as anti-inflammatory. ये जो अभी तीन क्लासेस देखे अपन ने कौन से? We have seen three classes. We have seen three classes: first class, second class, and third class. These three classes drugs, under these three classes they are having analgesic, antibiotic as well as good anti-inflammatory activity. Now some drugs are having analgesic, antibiotic but poor anti-inflammatory activity. Poor anti-inflammatory activity इसमें क्या है? कम है. In that you have first para-aminophenol derivative. मतलब आपका फेवरेट कौन है? पैरास्टामोल. para-aminophenol derivative क्लास के ऊपर क्वेश्चन आता है. Then it is also known as acetaminophen. Acetaminophen or paracetamol. And there is one more drug known as phenacetin. Phenacetin is also this para-aminophenol derivative. Then second class is there pyrazolone derivative. इसमें आता है dipyrone, इसको बोलते हैं metamizole, and propiphenazone. Then benzoxazone derivative, benzoxazone derivative, in that you have NIPHOFARM.
दे आर द ड्रग विच आर एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक बट पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी। तो ये ड्रग जो है मोस्टली यूज्ड एज एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक, नॉट फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी। जो अमाइनो फिनॉल डेरिवेटिव है, पायराजोलोन डेरिवेटिव है, जो बेंजोजोसिन है ना, बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव है, मतलब ये तीन जो है, ये तीन क्लासेस, दे आर एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक बट पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब दे आर नो यूज्ड एज एंटी इन्फ्लेमेटरी, बट ऑल अदर दे आर द एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक plus anti-inflammatory, right? So we have seen the classification, you might have understood. So next you can see over here again the classification. पहला है non selective COX inhibitor, they inhibit COX on COX to both, also known as a traditional NSAID। तो टर्म्स के बीच में आपको फंसा देंगे, जीपैट में आपको टर्म्स के बीच में फंसा देंगे, बिकॉज आपको ये मालूम नहीं कि so all these non-selective COX inhibitor they are known as a traditional NSAIDs, तो salicylic acid derivative, acetylsalicylic acid और aspirin, then salicylic acid, then methyl salicylate, then salicylate etc. पैराअमाइनोफिनॉल डेरिवेटिव में आता है फेनासिटीन, पैरासिटामोल, पायराजोलोन में आता है फिनाल्यूटाजोन, ऑक्सीपेनिटाजोन, इंडोल डेरिवेटिव में आता है इंडोमिथाजिन, सुलेंडेक। इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, इंडोमिथाजिन इंडोल डेरिवेटिव, हेट्रोसाइक्लिक अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, जीपैट 2023 में आ चुका है क्वेश्चन, हेट्रोसाइक्लिक अराइल एसिटिक एसिड, जीपैट 23-24 दोनों साल आ चुका है, डाइक्लोफेनेक, टोलमेटिन, केटोरलैक, दे आर द हेट्रोसाइक्लिक अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। देन प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आइबुप्रोपेन, तो प्रोपेन है ना, आइबुप्रोपेन है ना, फिनोप्रोपेन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोपेन, पाइप्रोपेन, देन फिनामेट्स और फेनेमिक एसिड डेरिवेटिव, इसमें आता है नेफेनेमिक एसिड, प्रोपेनेमिक एसिड, देन ऑक्सीकेम्स और ऑक्सीकेम्स में आता है पायरोक्सिकम, मेनोक्सिकम, टेनोक्सिकम। देन सेकंड क्लास है प्रेफरेंशियल COX 2 inhibitor, प्रेफरेंशियल COX 2 inhibitor, they inhibit COX 2 more than COX 1, एग्जांपल क्या है, निमोस्लाइड, नाबोमेटोन, मेनोक्सिकम है ना, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक। तो इसके ऊपर जीपैट 20 में भी क्वेश्चन आ चुका है। नाउ सिलेक्टिव COX 2 inhibitor, इसके ऊपर भी 2-4 बार आ चुका है, दे आर द कॉक्सिप्स, सिलेकॉक्सिब, पैराकॉक्सिब, इट्रोकॉक्सिब, वाल्डेकॉक्सिब, राइट, दीज आर द सिलेक्टिव COX 2 inhibitor। ठीक है, यहाँ पे और एक क्लास बोलता हूँ आपको, सिलेक्टिव COX 3 inhibitor, सिलेक्टिव COX 3 inhibitor, COX 3, सिलेक्टिव COX 3 inhibitor कौन है, पैरासिटामोल, पैरासिटामोल इज अ सिलेक्टिव COX 3 inhibitor, याद रखना है आपको, सिलेक्टिव COX 3 inhibitor इज अ पैरासिटामोल। अगेन यहाँ पे एक बार क्लासिफिकेशन देख लो, so NSAIDs और नॉन ओपियोइडल एनालिसिस और नॉन नार्कोटिक एनालिसिस, नॉन ओपियोइड्स और नॉन नार्कोटिक एनालिसिस और NSAIDs, तो ड्रग विथ अ वीक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, एग्जांपल इज अ पैरासिटामोल, ड्रग हैविंग माइल्ड टू मॉडरेट एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, एग्जांपल इज अ प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव लाइक है ना, फेनप्रोपेन, फेनोप्रोपेन, आइबुप्रोपेन, कीटोप्रोपेन, नेप्रोक्सेन। देन फेनामिक एसिड डेरिवेटिव में आता है नेफेनिक एसिड, फेनफेनामिक एसिड, नॉन एसिडिक ड्रग में आता है नाबोमेटोन। तो मोस्ट ऑफ द NSAIDs दे आर एसिडिक ड्रग, मोस्ट ऑफ द NSAIDs दे आर एसिडिक ड्रग, मोस्ट ऑफ द NSAIDs, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द NSAIDs दे आर रैसमिक मिक्सचर, आपको याद रखना है, ऑल NSAIDs आर रैसमिक मिक्सचर, याद रखना है, NSAIDs आर द रैसमिक मिक्सचर, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ इनहेंशोमर्स, बट देयर इज एन वन ड्रग विच इज नॉट अ रैसमिक मिक्सचर, उसका नाम है आपका इटोडोलैक, इटोडोलैक इज नॉट अ रैसमिक मिक्सचर, इटोडोलैक। देन नाबोमेटोन क्या है, इट इज नॉट अ एसिडिक ड्रग, है ना, ऑल आर द एसिडिक ड्रग बट नाबोमेटोन इज नॉट, ये बाद में बोलूंगा मैं आपको स्पेशल पॉइंट्स में। नाउ स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, तो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव एस्पिरिन, बेनोइलेट, डायफेनोइसम, पायराजोलोन में आता है azapropazoन, ऑक्सीपेनबिटाजोन एंड फिनाइलबिटाजोन, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में आता है
डाइक्लोफेनाक, इटोरलैक एंड इंडोमेथासिन। ऑक्सीकैम में आता है पारोक्सिकैम, टेनोक्सिकैम, लोटनोक्सिकैम, मेलोक्सिकैम। So we have seen the classification. Tomorrow we'll see again the classification and all the drugs also. तो कल भी अपन पूरा देखेंगे एक बार क्लासिफिकेशन, रैपिड डिवीजन में क्लासिफिकेशन लूँगा मैं आपका कल, और बाद में फिर अपन इंडिविजुअल ड्रग देखेंगे, बहुत सारा कंटेंट है। आई थिंक लास्ट ईयर आई हैव टेकन ओनली 1 लेक्चर ऑफ दिस, नाउ दिस ईयर आई एम गोइंग टू टेक 3 लेक्चर्स ऑन दिस। तो आज तो पहला हो गया, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, और केमिस्ट्री का एक और होगा चौथा। So total 4 lectures will be there on NSAIDs. I hope you have understood. If you have understood, write yes in the comment box.